Welcome students. So we were continuing our chapter, second chapter of democratic politics, that was federalism. In the first part, I have explained you about what is meant by federalism. Then I have told you about the features of federalism. Then I have told you about two type of federations were there, coming together federation and holding together federation. One more difference we have studied, unitary and federation difference. Okay? Now the next topic of this chapter, here in this module we will cover two questions, and these are 5 marks each questions, and on the basis of these many 1 marks question can also be made. Okay? See, so the topic is two questions which we are studying in this module is what makes India a federal country. So this we have understood कि federalism है India में, because we are also having vertical division of power. One is central government that makes laws या that look after the whole country, and they are respectively state governments. ठीक है, तो vertical division of power federalism तो है, but क्या चीज इंडिया को फेडरलिज्म बनाती है? ठीक है, क्लियर? कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा बैकिंग के, हाँ इंडिया आज फेडरलिज्म है और हमेशा भी फेडरलिज्म ही रहेगा. तो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? ठीक है, तो फर्स्ट आई एम आंसरिंग दिस, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो व्हेन वी वर स्टडीइंग द फीचर्स इन द प्रीवियस मॉड्यूल, तो उसमें एक पॉइंट बताया था मैंने कि फर्स्ट फीचर वाज देयर कि फेडरलिज्म देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, वो इंडिया में है. ठीक है, उसमें एक मेन था कि सेकेंड पॉइंट में जो था, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन एंड ईच टायर हैज इट्स ओन जरिस्डिक्शन. और ये जरिस्डिक्शन मेंशन कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में. मतलब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है. तो दिस इज द आंसर. ठीक है, सी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 3 मेन लिस्ट मेंशन. हमारे संविधान में 3 लिस्ट आर मेंशन. व्हाट आर दीज लिस्ट? सो दीज लिस्ट आर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. व्हाई आर दे? व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस? तो यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है इन विच ऑल द सब्जेक्ट्स, अप्रोक्स 97 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, 97 टॉपिक्स आर देयर ऑन विच ओनली यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ. मीन्स इट इज मेंशन क्लियरली, उनका जो जरिस्डिक्शन है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सेकेंड इज स्टेट लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट इज व्हाट? स्टेट लिस्ट इज दैट लिस्ट विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक द लॉज. एंड थर्ड इज concurrent. Concurrent in mathematics you might have read concurrent points, 2.3 points from which one line pass, that is called concurrent. तो same. ठीक है, तो concurrent list क्या है? Concurrent list is that list on which both the government, means central government and state government, both can make laws. ठीक है, तो but if by chance dispute arises, central government is saying some other thing, state government is saying some other thing, then whose decision will be the final? So answer is central government, because obviously central government is comparatively more powerful. So this threefold distribution, this is called threefold distribution of legislative powers. Power है ना, power अधिकार है सबका अलग अलग टॉपिक्स पे. This threefold distribution mentioned in the constitution makes India a federal country. This is the answer. Okay, clear है? तो the question can come also like this. First is what makes India a federal country. Second is explain the threefold distribution of power. अभी इसके साथ एक और चीज भी है, that also I will tell. But first let's focus and read it. What are these 3 lists? ठीक है? See, what makes India a federal country? To answer, the Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union and the state government. So accordingly 3 lists are given. ठीक है? First is the union list. क्या आता है इसमें? यूनियन मतलब सेंट्रल, आई टोल्ड, एंड दिस लिस्ट कवर्स द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कंट्री लेवल इंपॉर्टेंस, ऑन विच वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, सेम पॉलिसी. अब जैसे ऐसा है करेंसी इज अ नोट, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एमपी इज हैविंग सेपरेट करेंसी, है ना, यूपी की अलग करेंसी हो. तो दिस इज फॉरेन अफेयर्स. तो दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्लस दिस requires a uniform policy throughout the country. That's why topics like these will come in the union list. See, it includes subjects of national importance which need a uniform policy throughout the country,
कौन कौन से मैटर्स? दिस 1 mark question can come. Defense is mentioned in which list of the constitution, like this. ठीक है, तो defense, currency, foreign affairs, only union government can make laws on it. Means on the subjects which are mentioned in the union list, only central government has the authority or the power to make laws on the subjects mentioned in the union list. ठीक है, so this is first list. Second is state list. It includes subjects of state and local importance. Obviously, state के अंदर के जो मैटर्स हैं, मुद्दे हैं, उन पे डिसीजन लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होगा. तो दो सब्जेक्ट्स आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर. सी ट्रेड है, ठीक है, तो कहीं पे ट्रेड पे कुछ % छूट है, कहीं पे कुछ. अभी जीएसटी आ गया है, बट पहले तो सिमिलर नहीं था ना. पहले टैक्स पॉलिसी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वर डिफरेंट. ठीक है, तो इसलिए हर स्टेट का अधिकार है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड state list. That subjects will come under the state list and the state government can make laws in it. ठीक है, now फिर third is concurrent list. ठीक है, concurrent list what? It includes the subject of common interest to both union and state government. So those who are there, those governments, those topics on which the central government and state government both can make laws. ठीक है, that subjects will be mentioned in concurrent list. It includes subject of common interest to both. State के लिए भी वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो it includes subject of common interest to both union and state government such as education, marriage, trade unions. तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं दोनों के लिए अहमियत रखते हैं और इन पे दोनों को लॉ बनाने का अधिकार है. Both government can make laws, but I told na, if dispute arises between state and central government, then who will make law? Then the central government law will prevail. So this is the threefold distribution, ठीक है, which makes India a federal country. But listen here. अब कुछ ऐसे subjects भी हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है. ठीक है, like अब constitution was made in 1950. ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी along with the drafting committee he had made constitution. But बहुत सारे ऐसे subjects हैं which are new, like computer software. That time computer was not so prevalent. Cyber crime, अभी ऐसे सपोज करो आप कोई ना कोई गलत चीज अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, तो दिस विल कम अंडर साइबर क्राइम. तो दीज वर सब्जेक्ट्स व्हिच वर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ दैट विल बी इंक्लूडेड इन विच लिस्ट? सो फॉर देम अ सेपरेट लिस्ट इज बीइंग मेड एंड दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज रेसिडुअरी लिस्ट. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, बिकॉज ये सब्जेक्ट बाद में आए हैं, so that government who is more powerful, that will be allowed to take the decisions. So apart from all these three lists, there is a separate list called residuary list for the subjects that have come up after the constitution was made. So subjects like computer software and cybercrime. More subjects are there, but in 10th only you will have to learn these topics only. Okay, so this was the answer. What makes India a federal country? Okay, ठीक है. Now we will study next question. ठीक है, so in next module. Okay, so now first question is completed. So now we'll shift to second question. ठीक है, what is second question? How is federalism practiced in India? तो our constitution has made India a federal country. That is okay, and it is mentioned in the constitution that we have to follow the policy of federalism according to these three lists and residual list. That's also okay, but बोलना और actually practice में लाना, these are two separate things. ठीक है, if suppose any person, any student say I will study well, ठीक है, but when actual time takes place, ठीक है, he is very careless, ठीक है, आलसी है, सो जाता है, और he is busy in making other things, ठीक है, playing with friends. तो what we say and what we implement, these are two separate things. So similarly, what makes India a federal country? So our constitution makes India a federal country. But how is federalism practiced? How the power is divided? How it is ensured that central government will not impose its will on the state government? तो उसके लिए क्या किया गया? So there are three main questions. Now this full answer carry 5 marks. And if suppose single question will come, it can come of 3 marks: linguistic state policy,
Second, language policy can alone come in 3 marks, and center state relation alone can come in 3 marks. ठीक है? So now we'll focus on this कि how federalism is actually practiced in India. See, written here, constitution provisions are necessary for the success of federalism. मतलब constitution का होना जरूरी है, but these are not sufficient. But alone this is not sufficient. Writing alone in the constitution is not sufficient. Real success of federalism is in the nature of democratic politics in India. ठीक है? तो real जो success है, that is in the politics. Means when we are making policy, how the government is being run. ठीक है? How the government look after the welfare of all section of society. How government share power. ठीक है? How government does not do discrimination. So these things really matters. These things will bring federalism in practice. Okay? See, so first is linguistic state. Linguistic मतलब on the basis of language. Linguistic state मतलब states on the basis of language. First, let me explain you what this is and how it has led to the actually practice of federalism in India. ठीक है? See, पहले क्या था? Before 1947, our Indian map, our India country was divided into many different type of regions, provinces. जैसे I will show in map. सेंट्रल प्रोविंस था एक, सेंट्रल एरिया जहां पे एमपी है, दैट वाज सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया. ठीक है? जहां राजस्थान है वहां राजपूताना था. तो दीज वर डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस. बट व्हेन ब्रिटिशर्स हैज गॉन in 1947, when we got independence, then the makers of our constitution thought that we should make states on the basis of language. That is the meaning of linguistic state. Okay, we will make state on the basis of language. Kyun? Because the people which are belonging to one common language, if they live in same area, same state, then it will be very easy for that state to run. जैसे आपने देखा था कि when we have read about Belgium and श्रीलंका, तो वहां पे यही प्रॉब्लम हो रही थी ना कि डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम एंड फ्रेंच वो अलग अलग थे, तो झगड़ा हो सकता था, बट दे हैव डन पावर शेयरिंग, तो नहीं हुआ. श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले अलग थे. ठीक है? एंड तमिल वर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट. तो सेम लेसन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लर्नड from the history, and they thought if we will make state on the basis of language, if we will keep same culture people, same religion people, same language people in same state, है ना, तो there are much chances कि dispute, झगड़े, conflict नहीं होंगे. ठीक है? भले ही इससे ये लगता है क्या कि this is very harmful for the country, फिर क्योंकि country united नहीं हो पाएगी, different language वाले people फिर कैसे एक साथ चलेंगे. But many have done criticism also of this. Okay, don't make states on the basis of language. You are dividing the country on the basis of language. But see, you are having right now, you know, na, Punjab is there. Most of the people belong to Punjabi language. Punjabi speaking people live there. Tamil Nadu, most of the people speaking Tamil lives there. तो फिर है ना ऐसा. Odisha, most of the people live speaking Odia language live there. अब ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि भी तमिलनाडु में एमपी का कोई बंदा जाके रह नहीं सकता, देयर ही कांट वर्क और देयर ही कांट डू जॉब. बट मोर पीपल लिविंग ऑफ सेम लैंग्वेज इन अ स्टेट हैज पॉसिबल दिस पावर शेयरिंग, हैज पॉसिबल दिस फेडरलिज्म एक्चुअली बीइंग प्रैक्टिस इन इंडिया. अंडरस्टूड? सो दिस वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट. ओके, नाउ आई विल शो यू विथ थ्रू मैप. सी हियर, you can see this map is given in your NCERT only. ठीक है? See, in this map, this was the previous map. ठीक है? I think the image will not be much clear, but you can see. यहां देखो अभी राजस्थान है. Here was राजपूताना. ये 1947 का मैप दिया हुआ है. राजपूताना मेंशन है. बीच में अभी हम जानते हैं here is MP, but here is it in central India. ठीक है? ये सेंट्रल प्रोविंस लिखा हुआ है. ठीक है? हैदराबाद इतना बड़ा एरिया है. ठीक है? आंध्र प्रदेश नहीं, हैदराबाद. तो ये 1947 में the states were very different. And if you will look here in current map, this is the 2006 map. You can see the 2020 map also. ठीक है? But mainly what I am telling you is that see, अब यहाँ कोई राजपूताना नहीं है, यहाँ राजस्थान is there. ठीक है? ठीक है? ना ही यहाँ पे सेंट्रल इंडिया है जैसा उस मैप में था. Here now MP is there.
ठीक है, ना ही यहां पे सेंट्रल प्रोविंस है, यहां महाराष्ट्र हो गया है. So these things I need to say, ठीक है, I need to explain कि now the states are being made on the basis of language. This is called linguistic state. Understood this? This is the proof. Okay. Now come back again to our topic only. ठीक है. So I'm reading it. The first main step which has been taken by the government to practice federalism in India was linguistic state. See, in 1947, boundaries of several old states were changed. I told you map only. In order to create new states, this was done. क्यों किया गया था ये? This was done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state. Same language people lived in same state, but not only language, on the basis of culture, on the basis of geography also, the states were being made. See, but some states were also created on the basis of culture, ethnicity or geography, like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. These are separate areas, ना? ठीक है, तो यहाँ का कल्चर, अब नागालैंड वगैरह एरिया जो है दैट इज इन द योर ईस्ट साइड, ठीक है, झारखंड वगैरह एरिया जो है छत्तीसगढ़ एमपी के नीचे बना. तो दीज वर नॉट ओनली बेस्ड मेड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज ओनली, एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर के बेस पे सेम कल्चर वालों को साथ रखना, लाइक दिस. ठीक है, फिर इट वॉज डन टू रिकॉग्नाइज देयर डिफरेंस एंड रिस्पेक्ट देम एंड देयर कल्चर. सो इन दिस वे वी हैव रिस्पेक्टेड ऑल कल्चर, वी हैव टुक ऑल पीपल अलॉन्ग विद अस, एंड दिस इज हाउ this was the first main step to make federalism actually practice in India. Okay. Now second is language policy. अब ये language, here also language word mention है. Language policy क्या है? Language policy means making all language या more language equal. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं. In the first chapter we have learned about सिन्हाला, श्रीलंका की बात की थी. तो दे हैव फॉलोड द मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी, और उनमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने ये किया था, दे हैव डिक्लेयर्ड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. ये प्रॉब्लम हुई थी. लेकिन इन इंडिया, ठीक है, इन आवर कंट्री, दे डिड नॉट डू दिस ब्लंडर मिस्टेक. ठीक है, व्हाट डिड दे डू? भले ही हम कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियन. Rest 60% speak different type of languages. Understood? So Hindi is the only official language. ठीक है, but not national language, official language. Clear it? Not national language, official language. But regarding, और ऐसा भी था कि in 1965 it was decided by the constitution कि English official language नहीं रहेगी. But most of the states like Tamil Nadu which do not know Hindi, they protest. ठीक है, so respecting them, English is also the official language. और उसके साथ 21 other scheduled language are being mentioned in the constitution. और कोई बच्चा अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देता है, जैसे एग्जांपल इफ यू वांट टू बिकम कलेक्टर, यूपीएससी एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यू कैन गिव एग्जाम इन एनी ऑफ द लैंग्वेज विच यू वांट. सो दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी. तो लैंग्वेज पॉलिसी में उन्होंने एक लैंग्वेज को सुप्रीम घोषित नहीं किया, लाइक Sinhala language was being declared supreme by the Sri Lankan government. They have respected all language. They have done power sharing. They have respected every culture. So this was the second step which led to the practice of federalism in India. Okay? I'm reading it, then I will show you how many languages are there in a book. Okay? See here. Our constitution does not give status of national language to any one language. Hindi was regarded the official language. Only, pehle, official, which are used in office. But Hindi is the mother tongue of only 40% Indians. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages. तो यहाँ written है, a candidate appearing in central government exams can give paper in any of the scheduled languages. This is how we respected all languages. Here, even the use of English, which I have told, hasn't stopped as official language after 1965 because Tamil Nadu, another state, demanded it. That's why 21 languages. I am showing you through this. You can see in this book. Okay? Pay attention here. See. These are the 21 languages. This is also mentioned in NCERT. Okay? You don't have to learn these. But see, Assamese, Bangla, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada. ठीक है? ऐसे करके. Total India की language तो 1100 हैं. But out of these, including Hindi, these 21 also were given. Here mentioned, and see here
22 total, including Hindi. 22 languages are there, which are scheduled languages. So this was the language policy of Indian government. Okay, so this was the second step, and 3-mark question, separate 3-mark question. Explain the language policy adopted by the central government or our constitution to make federalism actually practice in India. So this is clear. Now, third and last step which was taken by the government in order to practice federalism, that is center-state relations. Center और state relation. First let us understand this, then I will read it. Center और state के relations. So पहले before 1990 in India क्या होता था? Mostly generally it happens कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सपोज करो बीजेपी की है तो मोस्टली ऐसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट भी किसकी थी? बीजेपी की. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन इट. व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर? ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा था, मतलब कोई भी हो सकता है. कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट मोस्टली होती थी. पहले ऐसा होता था. क्यों होता था? दैट ऑल्सो आई विल टेल. ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, आवर टॉपिक इज सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अच्छे नहीं थे. क्यों? बिकॉज सपोज अगर बाय चांस सेम गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाएगी स्टेट गवर्नमेंट को भी वो मानना पड़ेगा, बिकॉज सेम पार्टी गवर्नमेंट होगी ना, बीजेपी. ठीक है, तो दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फॉलो एंड मेक पॉलिसी ऑफ इट्स ओन. तो भैया स्टेट की प्रॉब्लम अलग है, तो स्टेट की पॉलिसी भी अलग होनी चाहिए. तो दिस वाज द प्रॉब्लम कि वो उनके पास खुद की पावर नहीं थी. और बाय चांस सपोज ऐसा होता कि हेयर इन सेंटर बीजेपी इज देयर एंड हेयर कांग्रेस इज देयर, तो बीजेपी कुछ न कुछ तिगड़म बना के, ठीक है, कुछ न कुछ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी कुछ भी. तो दिस वाज द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस वर नॉट गुड. दैट वाज नॉट प्रूविंग बेनिफिशियल फॉर द पीपल. So what happened after 1990? After 1990, many regional parties grow up. Regional मतलब state parties. तो state parties बहुत सारी आ गई, है ना, JDU, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, और बहुत सारी पार्टी है, ममता बनर्जी जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है. तो दीज पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी, अभी आप जानते ही हैं. तो दीज पार्टीज ब्रॉट अप. तो इन पार्टीज के आने से क्या हुआ? इन पार्टीज के आने से हुआ कि नो वन पार्टी इज गेटिंग मेजॉरिटी. So they have to form government by alliance. Alliance मतलब मिलके, ठीक है. तो that government was known as coalition government. Coalition मतलब गठबंधन सरकार, मिलजुल के सरकार चलाना. तो इस तरीके से now the center state relations जो पहले थे वो चेंज हो गए. क्यों? Because now if suppose any other government in center and suppose BJP government is in center and suppose करो ममता बनर्जी की या कोई और गवर्नमेंट, कांग्रेस या कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टेट में है, नाउ दे कांट डिसमिस देम. क्यों? बिकॉज कभी ना कभी तो इनको भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, कभी ना कभी कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए इनको सपोर्ट लेना पड़ेगा. तो इसलिए दे यूज टू रिस्पेक्ट अदर गवर्नमेंट, दे डोंट यूज टू डिसमिस. थोड़ा बहुत अभी भी होता है बट नॉट ऑफन. तो दिस इज हाउ आफ्टर 1990 by the growing up of regional parties and by the forming up of coalition government, so the relations of center and state changed, and now the center started respecting the states. So this is how the federalism is actually being practiced. See, restructuring means reforming center state relations is one more way to strengthen federalism. Prior to 1990, mostly it happened that same party ruled at the center and the state, and this had many problems. I told you problems. Okay, all this changed after 1990. This period saw the rise of regional political parties, क्षेत्रीय parties उस area की, ठीक है. This was also the beginning of era of coalition government, that is alliances. So this is how by these three steps, first was the formation of linguistic states, second was the language policy adopted by the government, and third was the change in the center state relation. These three steps led to the actual practice of federalism in India. ठीक है, so this is 5-mark question and each separately 3 mark question. Next we will study next module. Thank you.